Hello everyone. Today we are going to discuss about an interesting topic that is very common especially in the developing countries, and that is tuberculosis of the lungs and other parts of the body. Now, TB is an infection that occurs due to the bacteria called the Mycobacterium tuberculosis, and इसके अंदर patient के usually lungs get involved, and that also can spread to other parts of the body. जैसे कि लंग्स के अलावा ये इंटेस्टाइनल टीबी हो सकता है, विमेन में ये यूट्राइन टीबी भी डेवलप हो सकता है, कुछ केसेस में बोन्स और अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन ऑल्सो गेट इन्वॉल्व्ड. These are, however, usually occur in the later stages of the disease. The most common site that affects the TB is the lungs. Now, why this happens or what type of TB is present is depends upon the how active the bacteria are in the body. So depending upon that, TB is classified into 2 or 3 forms. That is the latent TB. लेटेंट टीबी वो उसे कहते हैं जहाँ पे कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के जर्म्स रहते हैं वो बॉडी में दे आर प्रेजेंट बट दे आर नॉट कॉजिंग एनी सिम्टम्स एंड सच इन द पेशेंट. So the person may have the immunity to fight, or the bacteria may be present and but they more in the lungs or in particular site, but they are not spreading or through the blood to other parts, and that why this is a latent kind of TB. The second form of TB, which is the active form, that is known as the active TB, वो उस केसेस में देखा जाता है जहाँ पे जो बैक्टीरिया है उनकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है और वो स्प्रेड करने लग जाते हैं फ्रॉम द लंग्स टू इवन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी और अदर ऑर्गन्स एज वेल. Now, this type of active TB shows positive result when the test is done for their diagnostic purpose. एक्टिव टीबी के अंदर बेसिकली जर्म्स की मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा फास्ट हो जाती है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, एंड आफ्टर दैट द पेशेंट हैव सिम्टम्स ऑफ टीबी. देन देयर इज़ सम अदर फॉर्म्स ऑफ टीबी, दैट इज़ द एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम कहते हैं, और वो उन केसेस में देखा जाता है जहाँ पे पेशेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि सच एज ऑर्गन्स आपके हो सकते हैं फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स लाइक लंग्स के अलावा किडनीज का टीबी हो सकता है, बोन्स का टीबी हो सकता है, इन वेमेन यूट्रस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, और कुछ केसेस के अंदर लिवर का टीबी या रेयर केसेस में, या फिर स्टमक टीबी और इंटेस्टाइनल टीबी कैन ऑल्सो अकर. ना ये जो केसेस देखने को मिलते हैं जो टीबी के, दिस पेशेंट्स ऑल्सो हैव अदर इश्यूज because the site that gets involved or the organ that get involved also develop the symptoms or pain, or they may have sensation of lump or pain at the site that gets involved due to the multiplication of this bacteria. Now let's talk about what are the symptoms of TB. ना टीबी के अंदर जो मोस्ट कॉमन सिम्टम और जो लंग्स के लेके इन्वॉल्व होता है, तो उसमें पेशेंट को यूजुअली जो कफ़ है वो परसिस्टेंटली 3 हफ्ते से ज़्यादा रहती है. पेशेंट को उसके अलावा कफ़ के साथ बॉडी पेन्स हो सकते हैं, उनको फीवर, सीवियर फीवर, स्पेशली इवनिंग टाइम में चिल्स हो सकती हैं, नाइट टाइम में फीवर डेवलप होता है पेशेंट को यूजुअली, और बॉडी वीकनेस रहती है पेशेंट को. ग्रेजुअली पेशेंट वीक होता जाता है या उसको वीकनेस फील होती है काफ़ी. इमेसिएशन पेशेंट को डेवलप हो जाती है कुछ केसेस में, और पेशेंट को इसके अलावा जो जनरल मेलेस है, टायर्ड फीलिंग रहती है सारा दिन, अगर वो थोड़ा सा भी काम कर लेता है उसको वीकनेस या हैवीनेस रह सकती है. अगर लंग्स इन्वॉल्व हैं तो पेशेंट को डिस्निया या ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो जाएगी कफ के साथ. अगर डिफरेंट ऑर्गन्स गेट इन्वॉल्व देन उसके अकॉर्डिंगली किस साइड पे वो एक्टिव है जर्म्स, उसके अकॉर्डिंग उनको उस ऑर्गन की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं. नाउ लेट्स सो दिस आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स, और फीवर के साथ चिल्स होना, स्वेट्स होना, इवनिंग स्वेट्स होना, मेलेस होना, बॉडी वीकनेस का होना, और कफ का परसिस्टेंटली रहना फॉर मोर देन 3 वीक्स. स्पूटम में कई बारी पेशेंट को ब्लड भी आने लग जाता है अगर एक्टिव फॉर्म ऑफ टीबी है पेशेंट में. तो इन सब केसेस पे पेशेंट को डायग्नोस्टिक टेस्ट ज़रूरी रहते हैं टू कंफर्म वेदर दे हैव दिस एक्टिव फॉर्म और द लेटेंट फॉर्म ऑफ टीबी.
Now let's talk about what are the diagnostics tests that confirm that the patient has the TB or not. क्योंकि कुछ केसेस के अंदर पेशेंट को इवन अगर लेटेंट टीबी होगा तो फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट भी आ सकते हैं और फॉल्स नेगेटिव टेस्ट भी आ सकते हैं. तो जो फॉल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्ट होते हैं वो कंफर्म नहीं करते हैं कि पेशेंट को टीबी है. इट ओनली शोज़ कि पेशेंट हैज़ दोज जर्म्स इन देयर बॉडी, बट पेशेंट को एक्टिव फॉर्म ऑफ टीबी है या नहीं है ये उसके दो पर्टिकुलर टेस्ट इन्वॉल्व रहते हैं. तो वी विल टॉक अबाउट दिस टेस्ट. सो पहला जो टेस्ट देखने को किया जाता है वो है स्किन टेस्ट, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द मैनटॉक्स टेस्ट. इसके अंदर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट की लोअर आर्म में, एंड आफ्टर अबाउट 1 day or 2 days द साइज ऑफ अ लम्प फॉर्म्स ऑन दैट पार्ट and that swelling is measured. If that swelling gets increased more than 5 centimeters or more than that means the patient has bacteria in their body, but that doesn't mean that the patient has active TB. सेकेंड जो टेस्ट किया जाता है वो है ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट के अंदर पेशेंट को दे आर इंजेक्टेड विद सम टीबी प्रोटीन्स दैट आर मिक्सड विद द ब्लड सैम्पल, और उसके साथ वो देखा जाता है कि पेशेंट के वो जर्म्स प्रेजेंट है या नहीं है. This is a more positive test, but to confirm that the patient has the test positive or not, the TB के जो confirmatory test रहते हैं वो है chest x-ray, जिसके अंदर की पेशेंट के anterior, posterior and lateral sides के chest के x-rays दिए जाते हैं और देखा जाता है कि पेशेंट के tubercular changes कोई present है lungs में या नहीं. इसके अंदर tubercules या nodules present देखने को मिलती है chest x-rays में, which are like small in size and they may be varying present upon which part of the lung is getting infected due to that. सेकेंड जो कन्फर्मेटरी टेस्ट रहता है इसके अलावा वो ब्लड टेस्ट के साथ स्पूटम टेस्ट रहता है, एंड दैट ऑल्सो इज़ डन टू चेक वेदर द ड्यूरिंग कफिंग द स्पूटम दैट इज़ obtained does that have the active bacteria in it or not. So these two confirmatory tests confirms that the patient is having tuberculosis or not. Now let's talk about some what are the ways or management that one can do or the preventive management that a person can do if they are having this problem. तो इसके अंदर पेशेंट को they should immediately consult the physician to prevent further spreading of this disease. They should take warm food and warm drinks as much as possible. Like if the mucus is thick, then we need to thin it out, so warm drinks that usually help them. Then their diet should be very nutritious and healthy, like they should take more of the nutritious foods and green veggies and fruits in their diets. Soups are really good in this case. If the patient is having weakness, amaze, fever, etc., then according to what the symptoms are, they are usually given medicines depending upon their problem or the TB medicines, but those tubercular medicines usually have side effects. In homeopathic medicines, we have medicines that can tackle this problem and prevent the side effects if individualization of the case is properly done. Now इसके अंदर ये देखने को मिलता है कि we have very good medicines, but also we need to know like when this problem started, and the patient should be also able to be maintaining proper hygiene, like properly washing their hands before taking any food. They should maintain proper hygiene whenever possible. They should not come in contact with persons who already have TB or they are positive with TB germs. Especially it is more seen in cases जहाँ पे पेशेंट को डायबिटीज़ हो, सीवियर किडनी डिजीज़ हो, या पेशेंट ऐसी एरियाज़ में काम कर रहे हैं सच एज हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स में जहाँ पे ये टेंडेंसी और पेशेंट्स की स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन मोर ईजिली हो सकता है, तो दे शुड अवॉइड गोइंग टू दोज प्लेसेस. Then they should also know that the patient having these chronic cases, like if they have patient is having AIDS or they have cancer of the head or the neck, or if they are having some other medicines that are depressing their immune system, then these should be avoided as this can further aggravate the tuberculosis problem.
Also, general management में they should be preventing going to these places, and also maintain proper distance from those who can spread the disease. ये देखा जाता है कि ये डिज़ीज़ कंटेजियस है, तो इस करके ये इजीली स्प्रेड करता है थ्रू म्यूकस ड्रॉपलेट्स. सो पर्सन जिनको कफ रहता है या जो स्नीजिंग का प्रॉब्लम रहता है या किसी के साथ वो इन कांटेक्ट आते हैं जहाँ पर कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम उनके आसपास किसी के पास है, then they can get infected from that person. So they should maintain proper hygiene and distance from such persons and properly maintain hygiene. However, ये डिज़ीज़ ना तो किसी कांटेक्ट के साथ स्प्रेड होता है, ना ये डिज़ीज़ किसी के पर्सनल यूजेस सच एज टावल्स और नैपकिन्स और एनी टॉयलेटरीज के कॉमन यूज से स्प्रेड होता है, ना ये इन कांटेक्ट विद सर्टन बेडिंग्स के साथ को स्प्रेड होता है, ना किसी के टच से स्प्रेड होता है. सो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट. Now let's talk about what are the symptoms of what are the management of tuberculosis in case with homeopathic management. So homeopathy में बहुत ही nice medicines are available, such as to mention a few, such as Kalikap, phosphorus, and then we have tuberculinum, then we have some other medicines as well, such as spongia. And depending upon what the patient's symptoms are and the individualization of the each and every individual case of patient, we can treat and prevent the spread of this problem using homeopathic management. However, it is important to know that it also has its certain limitations, like if the patient already has blood in their mucus, if they are having a very high level of infection, if the pathology is really advanced, such as that the patient is almost the whole lungs are damaged, in those cases it is very important to really be very careful while giving the medicines, and that too in the proper dosage, so that we don't aggravate the condition of the patient, but however we can improve and prevent further spreading of the germs and the infection to other organs of the body. Also, if the patient have different organs that have got involved due to the tuberculosis infection, then that can be also tackled using homeopathic medicines depending upon what symptoms they are facing. Like for example, अगर intestinal TB है patient को, then obviously we have to see what the symptoms are the patient is having, like are they having any stomach pain, are they having any issues while or after eating food, after is there any pain that is being referred to other part of the organ, or they are having some bleeding or intestinal bleeding involving due to the tubercular infection. So we have to first decrease that tendency, and then once that is improved, then we can give the medicines and manage them properly using the treatment of the case. Also then there are patients जैसे स्पेशली इन वेमेन जिनको यूट्राइन टीबी का केस होता है, या कुछ केसेस में वेजाइनल टीबी या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन केसेस के अंदर भी पेशेंट को ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हो सकता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. दे मे हैव पेन ड्यूरिंग ब्लीडिंग, दे मे हैव बैक पेन, और दे मे हैव सम अदर सिम्टम्स और वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यू टू द tuberculous infection, and sometimes the cervix gets damaged in such cases and some other problems may arise. And if the patient is a young patient with this condition, then they may have also difficulty conceiving or having children. So for those cases, proper management and with both homeopathic management and proper general disease management should be followed, and then the proper treatment be taken. अगर एक्टिव टीबी है, it is also recommended that they take some other medicines as well, but if they are not taking, they can also do it managed with the homeopathic medicines, provided the proper case is taken and the individualization of the case is done depending upon what they are having, how the problem started, and how it is affecting the patient as a whole. So I hope you got some good information about the tuberculosis and its homeopathic management, the symptoms and the diagnostic purposes. And in case you got some good information, kindly like and share my video, and have a great day.